1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 20 चैप्टर 20 वर्स से 21 चैप्टर 1 to 4 वर्स, और 1 सैमुअल 20 चैप्टर 21 चैप्टर 22 चैप्टर। लूक का रचित सुसमाचार 20 अध्याय, उसका 20 वचन से 21 अध्याय के 1 वचन से 4 वचन तक, और पहला शमूएल 20 अध्याय 21 अध्याय 22 अध्याय। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। ल्यूक 20 चैप्टर 20 वर्स से लेकर शुरू करेंगे। And they watched him and sent forth spies which should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor. And they asked him, saying, Master, we know that thou sayest and teachest rightly, neither acceptest thou the person of any, but teachest the way of God truly. Is it lawful for us to give tribute unto Caesar, or no? But he perceived their craftiness, and said unto them, Why tempt ye me? Shew me a penny, whose image and superscription hath it? They answered and said, Caesar's. And he said unto them, Render therefore unto Caesar the things which be Caesar's, and unto God the things which be God's. And they could not take hold of his words before the people, and they marveled at his answer, and held their peace. Then came to him certain of the Sadducees, which deny that there is any resurrection, and they asked him, saying, Master, Moses wrote unto us, if any man's brother die, having a wife, and he die without children, and that his brother should take his wife and raise up seed unto his brother. There were therefore 7 brethren, and the first took a wife and died without children, and the second took her to wife, and he died childless. And the third took her, and in like manner the 7 also, and they left no children, and died. Last of all, the woman died also. Therefore, in the resurrection, whose wife of them is she? For 7 had her to wife. And Jesus answering said unto them, the children of this world marry and are given in marriage, but they which shall be accounted worthy to obtain that world and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage, neither can they die any more, for they are equal unto the angels, and are the children of God, being the children of the resurrection. Now that the dead are raised, even Moses shaved at the bush when he called 37 वर्स और एक बार पढ़ेंगे। Now that the dead are raised, even Moses shaved off the bush when he calleth the Lord the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob. For he is not a God of the dead, but of the living, for all
all live unto him. Then certain of the scribes answering said, Master, thou hast well said. And after that they durst not ask him any question at all. And he said unto them, How say they that Christ is David's son? And David himself saith in the book of Psalms, The Lord said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool. David therefore calleth him Lord. He is he then his son. Then in the audience of all the people he said unto his disciples, Beware of the scribes which desire to walk in long robes and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms as at feasts, which devour widows' houses, and for a show make long prayers, the same shall receive greater damnation. Chapter 21, 1 to 4 verse. Christ commendeth the poor widow, foretelleth the destruction of the temple, etc. First verse. And he looked up and saw the rich men casting their gifts into the treasury. And he saw also a certain poor widow casting in thither 2 mites. And he said, Of a truth I say unto you, that this poor widow hath cast in more than they all, for all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury hath cast in all the living that she had. लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय का 20 वचन से और आगे जाकर लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय में जाना है। वहाँ से 1 वचन से 4 वचन तक पढ़ना है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय 20 वचन से। और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष धर कर उसकी कोई न कोई बात पकड़े, ताकि उसे हकीम के हाथ और अधिकार में सौंप दे। उन्होंने उससे यह पूछा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है, तू ठीक कहता और सिखाता भी है, और किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उसने उसकी चतुराई को ताड़कर उनसे कहा, 1 दीनार मुझे दिखाओ, इस पर किसकी छाप और नाम है? उन्होंने कहा, कैसर का। उसने उनसे कहा, तो जो कैसर का है वह कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ न सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। पुनरुत्थान और विवाह 27 वचन से आगे। फिर सदुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना ही है ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए यह लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले। 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए। अंत में वह स्त्री भी मर गई, इसलिए जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे
और पुनरुत्थान की संतान होने से परमेश्वर की भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कुछ ने यह कहा, हे गुरु, तूने अच्छा कहा, और उन्हें फिर उससे कुछ और पूछने का हियाव न हुआ। मसीह किसका पुत्र है? फिर उसने उनसे पूछा, मसीह को दाऊद की संतान कैसे कहते हैं? दाऊद आप भजन संहिता की पुस्तक में कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँवों के तले न कर दूं। दाऊद तो उसे प्रभु कहता है, तो फिर वह उसकी संतान कैसे ठहरा? शास्त्रियों से सावधान। जब सब लोग सुन रहे थे तो उसने अपने चेलों से कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे लंबे वस्त्र पहने हुए फिरना अच्छा लगता है और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य आसन और भोज में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये बहुत ही दंड पाएंगे। कंगाल विधवा का दान, 21 अध्याय 1 वचन से 4 वचन तक। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। 1 सैमुअल चैप्टर 20, 21, 22 पढ़ेंगे। चैप्टर 20 किंग्स जेम्स वर्शन में से चल रहा है। डेविड consults the Jonathan for his safety. Their covenant renewed by oath. Saul, missing David, seeks to kill Jonathan. Jonathan and David lovingly part. And David fled from Naioth in Ramah and came and said before Jonathan, what have I done? What is mine iniquity? And what is my sin before thy father, that he seeketh my life? And he said unto him, God forbid, thou shalt not die. Behold, my father will do nothing, either great or small, but that he will shew it me. And why should my father hide this thing from me? It is not so. And David sware moreover, and said, Thy father certainly knoweth that I have found grace in thine eyes. And he saith, Let not Jonathan know this, lest he be grieved. But truly, as the Lord liveth, and as thy soul liveth, there is but a step between me and death. Then said Jonathan unto David, whatsoever thy soul desireth, I will even do it for thee. And David said unto Jonathan, Behold, tomorrow is the new moon, and I should not fail to sit with the king at meat, but let me go, that I may hide myself in the field unto the 3rd day at even. If thy father at all miss me, then say, David earnestly asked leave of me, that he might run to Bethlehem his city, for there is a yearly sacrifice there for all the family. If he say thus, It is well, thy servant shall have peace, but if he be very wroth, then be sure that evil is determined by him.
Therefore thou shalt deal kindly with thy servant, for thou hast brought thy servant into a covenant of the Lord with thee. Notwithstanding, if there be in me iniquity, slay me thyself, for why shouldest thou bring me to thy father? And Jonathan said, Far be it from thee, for if I knew certainly that evil were determined by my father to come upon thee, then would not I tell it thee? Then said David to Jonathan, Who shall tell me? Or what if thy father answer thee roughly? And Jonathan said unto David, Come and let us go out into the field. And they went out both of them into the field. And Jonathan said unto David, O Lord God of Israel, when I have sounded my father about tomorrow any time, or the third day, and behold, if there be good toward David, and I then sent not unto thee, and shew it thee. The Lord do so and much more to Jonathan. But if it please my father to do thee evil, then I will shew it thee and send thee away, that thou mayest go in peace, and the Lord be with thee, as he hath been with my father. And thou shalt not only while yet I live shew me the kindness of the Lord, that I die not, but also thou shalt not cut off thy kindness from my house forever. No, not when the Lord hath cut off the enemies of David, every one from the face of the earth. So Jonathan made a covenant with the house of David, saying, Let the Lord even require it at the hand of David's enemies. And Jonathan caused David to swear again, because he loved him, for he loved him as he loved his own soul. Then Jonathan said to David, Tomorrow is the new moon, and thou shalt be missed, because thy seat will be empty. And when thou hast stayed 3 days, then thou shalt go down quickly and come to the place where thou didst hide thyself when the business was in hand, and shalt remain by the stone Ezel. And I will shoot 3 arrows on the side thereof, as though I shot at a mark. And behold, I will send a lad, saying, Go, find out the arrows. If I expressly say unto the lad, Behold, the arrows are on this side of thee, take them, then come thou, for there is peace to thee, and no hurt, as the Lord liveth. But if I say thus unto the young man, Behold, the arrows are beyond thee, go thy way, for the Lord hath sent thee away. And as touching the matter which thou and I have spoken of, behold, the Lord be between thee and me forever. So David hid himself in the field, and when the new moon was come, the king sat him down to eat meat. And the king sat upon his seat as at other times, even upon a seat by the wall. And Jonathan arose and Abner sat by Saul's side, and David's place was empty. Nevertheless, Saul spake not anything that day, for he thought, Something hath befallen him. He is not clean, surely he is not clean. And it came to pass on the morrow, which was the second day of the month, that David's place was empty. And Saul said unto Jonathan his son, Wherefore cometh not the son of Jesse to meet, neither yesterday nor today? And Jonathan answered Saul, David earnestly asked leave of me to go to Bethlehem. And he said, Let me go, I pray thee, for our family hath a sacrifice in the city, and my brother he hath commanded me to be there. And now, if I have found favor in thine eyes, let me get away, I pray thee, and see my brethren.
Therefore he cometh not unto the king's table. Then Saul's anger was kindled against Jonathan, and he said unto him, Thou son of the perverse, rebellious woman, do not I know that thou hast chosen the son of Jesse to thine own confusion and unto the confusion of thy mother's nakedness? For as long as the son of Jesse liveth upon the ground, thou shalt not be established, nor thy kingdom. Wherefore now send and fetch him unto me, for he shall surely die. And Jonathan answered Saul his father, and said unto him, Wherefore shall he be slain? What hath he done? And Saul cast a javelin at him to smite him, whereby Jonathan knew that it was determined by his father to slay David. So Jonathan arose from the table in fierce anger, and did eat no meat the second day of the month, for he was grieved for David, because his father had done him shame. And it came to pass in the morning that Jonathan went out into the field at the time appointed with David, and a little lad with him. And he said unto his lad, Run, find out now the arrows which I shoot. And as the lad ran, he shot an arrow beyond him. And when the lad was come to the place of the arrow which Jonathan had shot, Jonathan cried after the lad and said, Is not the arrow beyond thee? And Jonathan cried after the lad, Make speed, haste, stay not. And Jonathan's lad gathered up the arrows and came to his master. But the lad knew not anything, only Jonathan and David knew the matter. And Jonathan gave his artillery unto his lad, and said unto him, Go, carry them to the city. And as soon as the lad was gone, David arose out of a place toward the south, and fell on his face to the ground, and bowed himself 3 times, and they kissed one another, and wept one with another, until David exceeded. And Jonathan said to David, Go in peace, for as much as we have sworn both of us in the name of the Lord, saying, The Lord be between me and thee, and between my seed and thy seed forever. And he arose and departed, and Jonathan went into the city. Chapter 21. David at Nob takes hallowed bread and Goliath's sword. At Gath he feigns himself mad. First verse. Then came David to Nob, to Ahimelech the priest, and Ahimelech was afraid at the meeting of David, and said unto him, Why art thou alone, and no man with thee? And David said unto Ahimelech the priest, The king hath commanded me a business, and hath said unto me, Let no man know anything of the business whereabout I sent thee, and what I have commanded thee, and I have appointed my servants to such and such a place. Now therefore, what is under thine hand? Give me 5 loaves of bread in mine hand, or what there is present. And the priest answered David and said, There is no common bread under mine hand, but there is hallowed bread, if the young men have kept themselves at least from women. And David answered the priest and said unto him, Of a truth, women have been kept from us about these 3 days since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the bread is in a manner common, yea, though it were sanctified this day in the vessel. So the priest gave him hallowed bread, for there was no bread there but the shewbread that was taken from before the Lord to put hot bread in the day when it was taken away. Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord, and his name was Doeg, an Edomite, the chiefest of the herdmen that belonged to Saul.
And David said unto Ahimelech, and is there not here under thine hand spear or sword? For I have neither brought my sword nor my weapons with me, because the king's business required haste. And the priest said, The sword of Goliath, the Philistine, whom thou slewest in the valley of Elah, behold, it is here wrapped in a cloth behind the ephod. If thou wilt take that, take it, for there is no other save that here. And David said, There is none like that, give it me. And David arose and fled that day for fear of Saul, and went to Achish the king of Gath. And the servants of Achish said unto him, Is not this David the king of the land? And did they not sing one to another of him in dances, saying, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s? And David laid up these words in his heart, and was sore afraid of Achish the king of Gath. And he changed his behavior before them, and feigned himself mad in their hands, and scribbled on the doors of the gate, and let his spittle fall down upon his beard. Then Achish unto his servants, Lo, ye see the man is mad. Wherefore then have ye brought him to me? Have I need of madmen, that ye have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house? Chapter 22. David's friends resort to him at Adullam. Doeg accuses Ahimelech. Saul commands to kill the priests. Abiathar escapes and flees after David. First verse. David therefore departed thence and escaped to the cave Adullam, and when his brethren and all his father's house heard it, they went down thither to him, and every one that was in distress, and every one that was in debt, and every one that was discontented gathered themselves unto him, and he became a captain over them. And there were with him about 400 men. And David went thence to Mizpeh of Moab. And he said unto the king of Moab, Let my father and my mother, I pray thee, come forth and be with you, till I know what God will do for me. And he brought them before the king of Moab, and they dwelt with him all the while that David was in the hold. And the prophet Gad said unto David, Abide not in the hold, depart, and get thee into the land of Judah. Then David departed and came into forest of Hareth. When Saul heard that David was discovered, and the men that were with him, now Saul abode in Gibeah under a tree in Ramah, having his spear in his hand, and all his servants were standing about him. Then Saul said unto his servants that stood about him, Hear now, ye Benjamites, will the son of Jesse give every one of you fields and vineyards, and make you all captains of thousands and captains of hundreds? Then all of you have conspired against me, and there is none that sheweth me that my son hath made a league with the son of Jesse, and there is none of you that is sorry for me, or sheweth unto me that my son hath stirred up my servant against me, to lie in wait as at this day. Then answered Doeg the Edomite, which was set over the servants of Saul, and said, I saw the son of Jesse coming to Nob, to Ahimelech the son of Ahitub, and he inquired of the Lord for him, and gave him
victuals and gave him the sword of Goliath the Philistine. Then the king sent to call Ahimelech the priest, the son of Ahitub, and all his father's house, the priests that were in Nob, and they came all of them to the king. And Saul said, Hear now, thou son of Ahitub. And he answered, Here I am, my lord. And Saul said unto him, Why have you conspired against me, thou and the son of Jesse, in that thou hast given him bread and a sword, and hast inquired of God for him, that he should rise against me to lie in wait as at this day? Then Ahimelech answered the king and said, And who is so faithful among all thy servants as David, which is the king's son in law, and goeth at thy bidding, and is honorable in thine house? Did I then begin to inquire of God for him? Be it far from me, let not the king impute anything unto his servant, nor to all the house of my father, for thy servant knew nothing of all this, less or more. And the king said, Thou shalt surely die, Ahimelech, thou and all thy father's house. And the king said unto the footmen that stood about him, Turn and slay the priests of the Lord, because their hand also is with David, and because they knew when he fled, and did not shew it to me. But the servants of the king would not put forth their hand to fall upon the priests of the Lord. And the king said to Doeg, Turn thou and fall upon the priest. And Doeg the Edomite turned, and he fell upon the priests, and slew on that day fourscore and 5 persons that did wear a linen ephod. And Nob, the city of the priest, smote he with the edge of the sword, both men and women, children and sucklings, and oxen, and asses, and sheep with the edge of the sword. And one of the sons of Ahimelech, the son of Ahitub, named Abiathar, escaped and fled over David. And Abiathar shewed David that Saul had slain the Lord's priest. And David said unto Abiathar, I knew it that day when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul, I have occasioned the death of all the persons of thy father's house. Abide thou with me, fear not, for he that seeketh my life seeketh thy life, but with me thou shalt be in safeguard। पहला शमूएल 20 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। 20, 21, 22 वचन पर अध्याय पढ़ना है। योनातन द्वारा दाऊद की सहायता। पहले वचन से 20 अध्याय पहले वचन से। फिर दाऊद रामा के नबायोत से भागा और योनातन के पास जाकर कहने लगा, मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ है? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राण की खोज में रहता है? उसने उससे कहा, ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। सुन, मेरा पिता मुझको बिना बताए न तो कोई बड़ा काम करता है और न कोई छोटा। फिर वह ऐसी बात को मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दाऊद ने शपथ खाकर कहा, तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है। वह सोचता होगा कि योनातन इस बात को न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ, निस्संदेह मेरे और मृत्यु के बीच डगही भर का अंतर है। योनातन ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरा जी चाहे वही मैं तेरे लिए करूँगा। दाऊद ने योनातन से कहा, सुन, कल नया चांद होगा और मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूं, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूंगा। यदि तेरा पिता मेरी कुछ चिंता करे तो कहना। दाऊद ने अपने नगर बैतलहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहाँ उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यों कहे, अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका क्रोध बहुत भड़क उठे
तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है। और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तूने यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ हो तो तू आप मुझे मार डाल। तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुंचाए? योनातन ने कहा, ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुझसे बुराई करनी ठानी है, तो क्या मैं तुझको न बताता? दाऊद ने योनातन से कहा, यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन मुझे बताएगा? योनातन ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाए। और वे दोनों मैदान की ओर चले गए। तब योनातन दाऊद से कहने लगा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ जब मैं पाऊं, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेजकर तुझे न बताऊंगा? यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रगट करके तुझे विदा न करूं तो कि तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातन से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे जैसा वह मेरे पिता के साथ रहा, और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा ऐसे करना कि मैं न मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, तब भी ऐसा करना। तब भी ऐसा न करना। 16 वचन से आगे, इस प्रकार योनातन ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई, यहोवा दाऊद के शत्रुओं से बदला ले। और योनातन दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने उसको फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उससे अपने प्राण के बराबर प्रेम रखता था। तब योनातन ने उससे कहा, कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर जहाँ तू उस काम के दिन छिपा था, अर्थात यज्रेल नाम पत्थर के पास रहना। तब मैं उसकी और मानो अपनी किसी ठहराए हुए चिन्ह पर 3 तीर चलाऊंगा। फिर मैं अपने टहलुए लड़के को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले आ। यदि मैं उस लड़के से साफ साफ कहूँ, देख तीर इधर तेरे इस ओर है, तू उसे ले आ, तो तू आ जाना, क्योंकि यहोवा के जीवन की शपथ तेरे लिए कुशल को छोड़ और कुछ न होगा। परंतु यदि मैं लड़के से यूं कहूँ, सुन तीर उधर तेरे उस ओर है, तो तू चले जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। और इस बात के विषय जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में की है, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा, और जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन करने को बैठा। राजा तो पहले के समान अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातन खड़ा हुआ और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निस्संदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा। अतः शाऊल ने अपने पुत्र योनातन से पूछा, क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न आज ही आया है? योनातन ने शाऊल से कहा, दाऊद ने बेतलहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी और कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज्ञ है और मेरे भाई ने मुझको वहाँ उपस्थित होने की आज्ञा दी है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों से भेंट कर आऊँ। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया।
तब शाऊल का कोप योनातन पर भड़क उठा और उसने उससे कहा, हे कुटिल राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यशै के पुत्र पर लगा है। इससे तेरी आशा का टूटना और तेरी माता का अनादर ही होगा, क्योंकि जब तक यशै का पुत्र भूमि पर जीवित रहेगा तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। योनातन ने अपने पिता शाऊल को उत्तर देकर उससे कहा, वह क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब शाऊल ने उसको मारने के लिए उस पर भाला चलाया। उससे योनातन ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। तब योनातन क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया और महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। सवेरे योनातन एक छोटा लड़का संग लिए हुए मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। तब उसने उस लड़के से कहा, दौड़कर जो जो तीर मैं चलाऊं उन्हें ढूंढ ले आ। लड़का दौड़ ही रहा था कि उसने एक तीर उसके परे चलाया। जब लड़का योनातन के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा, तब योनातन ने उसके पीछे से पुकार के कहा, तीर तो तेरे उस ओर है। फिर योनातन ने लड़के के पीछे से पुकार के कहा, फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातन का लड़का तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास ले आया। इसका भेद लड़का तो कुछ न जानता था, केवल योनातन और दाऊद उस बात को जानते थे। तब योनातन ने अपने हथियार उस लड़के को देकर कहा, जा इन्हें नगर को पहुंचा। ज्यों ही लड़का गया, त्यों ही दाऊद दक्षिण दिशा की ओर से निकला और भूमि पर औंधे मुंह गिर के 3 बार दंडवत की। तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। तब योनातन ने दाऊद से कहा, कुशल से चला जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे से यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा मेरे और तेरे मध्य और मेरे और तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। तब वह उठकर चला गया और योनातन नगर में गया। 21 अध्याय दाऊद का शाऊल के पास से भागना। पहले वचन से, तब दाऊद नोब को गया और अहीमेलेक याजक के पास आया, और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थरथराता हुआ निकला और उससे पूछा, क्या कारण है कि तू अकेला है और तेरे साथ कोई नहीं? दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हो। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उठाई गई थी, कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। उस दिन वहाँ दोयग नामक शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी था और शाऊल के चरवाहों का मुखिया था। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ही लाया। याजक ने कहा, हाँ, पलिश्ती गोलियात जिसे तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लपेटी हुई एपोद के पीछे रखी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़ और कोई यहाँ नहीं है। दाऊद बोला,
उसके तुल्य कोई नहीं, वही मुझे दे। तब दाऊद चला और उसी दिन शाऊल के डर के मारे भागकर गत के राजा अकीश के पास गया। और अकीश के कर्मचारियों ने अकीश से कहा, क्या वह इस देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या लोगों ने उसी के विषय नाचते नाचते एक दूसरे के साथ यह गाना न गाया था कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा अकीश से अत्यंत डर गया। तब उसने उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पड़कर पागल सा बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचने और अपनी लार अपनी दाढ़ी पर बहाने लगा। तब आकीश ने अपने कर्मचारियों से कहा, देखो, वह जन तो बावला है, तुम उसे मेरे पास क्यों लाए हो? क्या मेरे पास बावलों की कुछ घटी है कि तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे भवन में आने पाएगा? 22 अध्याय पहले वचन से याजकों की हत्या। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, और वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोवाब के मिस्पा को जाकर मोवाब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दो जब तक कि मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोवाब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रहे, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के जंगल में गया। तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता लग गया है। उस समय शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक झाऊ के पेड़ के नीचे हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था और उसके सब कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा, हे बिन्यामीनियों, सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र ने यिशै के पुत्र से वाचा बांधी, तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया, और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्मचारी को मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने को उभारा है, जैसा आज के दिन है। तब एदोमी दोयग ने, जो शाऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा, मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा, और उसने उसके लिए यहोवा से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और पलिश्ती गोलियात की तलवार भी दी। तब राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को, अर्थात नोब में रहने वाले याजकों को बुलवा भेजा। और जब वे सब के सब शाऊल राजा के पास आए, तब शाऊल ने कहा, हे अहीतूब के पुत्र, सुन। वह बोला, हे प्रभु, क्या आज्ञा? शाऊल ने उससे पूछा, क्या कारण है कि तू और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने उसे रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से पूछा भी, जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जैसा आज के दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों ने दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राजसभा में उपस्थित हुआ करता और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा न तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाए, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इन सब बातों के विषय कुछ भी नहीं जानता। राजा ने कहा, हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। फिर राजा ने उन पहरुओं से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी, मुड़ो
और यहोवा के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने भी दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर भी मुझ पर प्रकट नहीं किया। परंतु राजा के सेवक यहोवा के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना न चाहते थे। तब राजा ने दोएग से कहा, तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सनी वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब को उसने स्त्रियों, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीतों और बैलों, गदहों और भेड़ बकरियों समेत तलवार से मारा। परंतु अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का अब्यातर नामक एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एब्यातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने यहोवा के याजकों का वध किया है। दाऊद ने एब्यातार से कहा, जिस दिन एदोमी दोएग वहाँ था, उसी दिन मैंने जान लिया था कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा। तेरे पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हुआ, इसलिए तू मेरे साथ निडर रह। जो मेरे प्राण का ग्राहक है, वही तेरे प्राण का भी ग्राहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मार्क 5 चैप्टर 1 वर्स से 13 वर्स तक, लेविटिकस 24 चैप्टर, मरकुस रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 वचन से 13 वचन तक और लेव्य व्यवस्था 24 अध्याय। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हमने अपने व्यक्तिगत समय में पढ़ना है, और जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें से परमेश्वर हमको कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, हमें सुधारना चाहता है। ऐसे वचनों को हमने उसके नोट्स बनाकर लिख कर रखना है और उसको हमारे रोज के जीवन में चलना है। जब हम ऐसा करेंगे तो 2 साल के अंत में हम परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति तैयार हो जाएंगे और परमेश्वर के काम आएंगे। हम ऐसा करने के लिए अनुग्रह परमेश्वर ने हमको दिया है, इसका हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।